Assalamu alaikum and welcome back. Today we are discussing Dockery and Son by Philip Larkin. So the title suggests that it is about Dockery and his son, but it is more about Larkin himself. So Dockery and Son, the title is reminiscent of the name of a family business, thus immediately presenting the reader with the notion of family. The generic structure of this name, including and son, would imply that tradition and family values may be the themes that crop up within this poem. Though this is underpinned by a sense of detachment that inevitability is presented when the name of an individual is neglected. Interestingly, the title could alternatively suggest that a speaker of this poem may be someone other than Dockery or his son, as to reference someone by the last name is uniquely formal and may allude to the speaker of the poem being slightly older, perhaps middle-aged, musing on what it means to have or be a son. And interestingly, Larkin gives the impression that having offspring is not something that he wishes to discuss in detail. The poem almost serves as a stand-alone statement on the topic. Uh, Here we also come to know that it is a kind of failure on the part of Philip Larkin that he is accepting. And that failure is not there on the part of Dockery, who's already having a son. So ये नज़म है जिसमें टाइटल तो डॉकरी और उसका बेटा, लेकिन ज़्यादातर ये बात लार्किन के अपने बारे में है, उसकी अपनी लाइफ के कुछ फेलियर्स के बारे में है. फिलिप लार्किन के बारे में हम जानते हैं कि उसने शादी नहीं की. सो ही रिमेन्ड अ बैचलर. उसके कुछ रिलेशंस थे लेकिन दे डिड नॉट रीच टू मैरिज एंड ही डिड नॉट हैव एनी ऑफस्प्रिंग. सो ये उसकी उस एहसास महरूमी को यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है इस नज़म के अंदर. Dockery was junior to you, wasn't he? Said the dean. His son's here now. Death-suited visitant, I knowed. And do you keep in touch with, or remember how black-gowned, unbreakfasted, and still half-tight we used to stand before the desk to give our version of these incidents last night? I tried the door of where I used to live. So this is the first stanza, which may be termed as Death. So Death may be the title to this first stanza. So stanza 1 alludes the dean of the speaker's university, and he's asking about Dockery, an individual whose son now attends the same university that he did. Alongside this, it depicts the speaker as returning to the place that is implied to be where life really begins, thus immediately presenting the reader with a comparison between Dockery and the speaker. Larkin opts to describe the dean in this stanza as death-suited, presenting an ironic juxtaposition between the notion of being in place where life supposedly begins, as the dean is dressed in something that would presumably be worn at the funeral. It may be like Larkin intended to present the reader with this imagery coupled with the semantics of death early on, in order to give the reader a sense that the speaker's life has not mirrored Dockery's typical path. For example, producing offspring, as it appears that Dockery has experience with life, but the speaker instead opts to death with death. This may be symbolic of the speaker mourning the loss of their youth, having graduated from the university. Therefore, suited may be representative of a detachment, disguise or armor that speaker utilizes to protect themselves from this comparison to Dockery, who by this point, the reader is aware, may serve as a metaphor
for achievements typical of 20th century, like having children to prolong the memory of individual. So the notion of deception is also addressed in the initial stanza, as our version would allude to a rapt memory of what speaker's youth was like. Thus, Larkin may be suggesting that Dockery's path may not be as ideal as is suggested by the title, and perhaps through the act of giving life to another individual, Dockery may have metaphorically died himself. So, this is typically a poem that represents life of Larkin himself. कि डॉकरी जो था वो इसका एक जूनियर था यूनिवर्सिटी में, इन दोनों ने उस यूनिवर्सिटी को इकट्ठे पढ़ा, एक ही टाइम पे ये थे। जो लार्किन था वो सीनियर था और ये अब डीन से मिला, तो डीन विजिट करते हुए व्हेन ही मीट्स डीन, तो डीन इसको लगा डेथ सूट में। सो दिस डेथ सूट सिंबलाइजेस कि ये ट्रेडिशंस की डेथ है, कि नॉर्मली ट्रेडिशन ये है कि जो बड़े हैं उनकी पहले शादी होगी, उनकी औलाद पहले होगी, छोटों की बाद में शादी होगी, उनकी औलाद बाद में होगी। तो ये जो ट्रेडिशन थी यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि जब उसने मेंशन किया कि डॉकरी यहाँ पे जो तुम्हारा जूनियर था, अब उसका बेटा इसी यूनिवर्सिटी में, और लार्किन ने तो शादी नहीं की। सो लार्किन की शादी ना करना इस चीज़ का रिजल्ट है कि वो यहाँ पे मौजूद, उस यानी उसकी कोई लाइनेज नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है जो उसे किसी से कनेक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल डॉकरी का जो बेटा है उसकी एक हिस्ट्री है कि उसका बाप भी यहाँ पे था, लेकिन लार्किन की हिस्ट्री उसके साथ ख़त्म हो चुकी है। सो आई नोट एंड डू यू कीप इन टच विद, और क्या तुम्हें याद है ये सब? और रिमेंबर हाउ ब्लैक गाउन एंड ब्रेकफास्टेड एंड स्टिल हाफ टाइट वी यूज्ड टू स्टैंड बिफोर दैट डेस्क। तो ये से याद आ रहा है पुराना टाइम जो कि वो हॉस्टल में या कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में गुजारा करते थे, जिस तरह ये कई दफ़ा गाउन्स में होते थे, नाश्ता नहीं किया होता था और नींद में होते थे, क्लासेस में आते थे। और टू गिव आवर वर्जन ऑफ दीज इंसिडेंट्स लास्ट नाइट, सो ही इज़ ट्राइंग टू रिकॉल दोज इंसिडेंट्स विच ही स्पेंट in university when he and Dockery both were there in the university. So I tried the door of where I used to live. तो यहाँ पे भी दो मीनिंग्स हैं कि वो दरवाज़ा खटखटाता है, खोलने की कोशिश करता है जहाँ पे ये रहा करता था। अब ये कहाँ पे रहा करता था? इट मे बी हॉस्टल विद इन द यूनिवर्सिटी। सो ये एक तो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है अपनी मेमोरी में, एंड सेकेंडली ये वो दरवाज़ा है जो कि इसकी लाइनेज को बरकरार रखे हुए है, जिसका एक लिंक हमें नेक्स्ट स्टैंजा में मिलता है। Now here in stanza 2 we come to know that the door he was trying is locked. Now this shows as if his memory where he's trying the door of his own room where he used to live is locked. Maybe he is not willing to remember that, or maybe he cannot remember that. Moreover, locked also suggests that Dockery is having a son. He is having someone to carry on with his name, but Larkin is not having someone who can continue with the name of Larkin, or like Larkin did not have any child, he did not marry. So this shows that that possibility is locked. So this is about society. So the title that we can give to this stanza is Society. So locked is an illusion. So this is again connected to the first stanza, like having no family, no children. I catch a known bell chimes. Okay, he is as if he has returned from the dean, और वो अपने घर को जा रहा है. So I catch my train ignored. So वो बिल्कुल अपने ख्यालों में खोया हुआ है. ट्रेन को पकड़ता है अपनी, शेफील्ड की तरफ जा रहा है. Canal and clouds and colleges subside slowly from view. So everything gets disappeared from his view because he's lost in his thinking. But Dockery, good Lord. So he's only thinking about Dockery, and he says anyone up today must have been born in 43. So Larkin was born in
1922. So he is now talking about 43 when he is writing this poem. So he says that when I was 21, so Larkin was 21 in 1943 when the incident is quoted here. तो ये 21 साल का था 1943 में, since he was born in 1922. So he says if he was younger, कि अगर डॉक्टरी मुझसे छोटा था, did he get this son at 1920? कि उसने ये यानी सिर्फ 19 या 20 साल की उम्र में उसकी औलाद भी हो गई. Was it that withdrawn, like withdrawn, high-collared public school boy? So ये नेक्स्ट स्टैंजा को इससे कनेक्ट करेंगे. अभी हम उससे पहले वाला देखते हैं कि उसने इतनी जल्दी औलाद कर ली अपनी, इतनी जल्दी एज में उसका बच्चा भी हो गया. सो यहाँ पे हम इससे कनेक्ट करते हुए देख रहे हैं कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट डॉक्टरी जिसने एक तरह से लाइफ में वो सब अचीव कर लिया जो कि सोसाइटी चाहती है. सोसाइटी प्रेशर देती है फैमिली बिल्डिंग पे, सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और एक्सपेक्ट करती है कि people should be married and then they should have children to carry on with their name, with their lineage. So यहाँ पे वो सोसाइटल प्रेशर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डॉक्टरी जो है उसने सब कुछ अचीव कर लिया, कि उसने शादी कर ली और उसने उसका बेटा हो गया. अब ये देखें ये क्यों इस चीज़ को कह रहे हैं कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया, कि ह्यूमन बींग्स की करेक्टरिस्टिक है कि दे आर आफ्टर दैट थिंग व्हाट दे डू नॉट हैव, जो उनके पास नहीं है. सो इसके पास चूँकि औलाद नहीं थी, शादीशुदा नहीं था, तो उसे डॉक्टरी इस लिहाज से बड़ा लकी लग रहा है. Now connecting the last line to this stanza, was he that withdrawn, high-collared public school boy, sharing rooms with Cartwright who was killed? Well, it just shows how little yawning, I suppose. So ये उस ट्रेन पे साथ साथ यौन भी कर रहा है और सोच भी रहा है. सो ही इज़ थिंकिंग अबाउट डॉक्टरी. सो यहाँ पे लार्किन फोकसेस ऑन दिस थिंग के जो बेसिकली एक सफोकेशन जो वो फील कर रहा है. सो दिस स्टैंजा मे बी टर्म्ड एज सफोकेशन, क्योंकि जो ये हाई कॉलर्ड है पब्लिक स्कूल बॉय, ये एक यूनिफॉर्मिटी का एहसास देता है यहाँ पे. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पब्लिक स्कूल बॉय हाई कॉलर जो है ये बेसिकली एक सफोकेशन की तरफ भी एल्यूजन है कि हाई कॉलर्ड वो है जो कि टाई वगैरह लगाई हुई है, उसके शर्ट का टॉप बटन बंद है और इसमें एक घुटन का एहसास है. So he manipulates the sense of disorientation in reader, as high collar would typically allude to an upper class child, perhaps a choir boy of a private school. Therefore, Larkin may be subtly critiquing the class system in this stanza, opting for a more holistic kind of approach to social critique than just the nuclear family structure. Perhaps this public school boy is Dockery's son. If so, it may be interpreted that Larkin intended to highlight the flaws within his domestic life, and alongside it, the pressure faced by children in a society with such rigid traditional values as is alluded in the notion of suffocation, and this is dominating this particular stanza. So, वो ये चीज़ें सोच रहा है डॉक्टरी के बेटे के बारे में कि maybe he is belonging to the elite class, or maybe he is again with the societal pressure, वो उस चीज़ के साथ मौजूद है, और in any way he is there. उस रूम शेयर कर रहा था कार्टराइट के साथ जो कि मारा गया था, लेकिन that is not important to us. So वो कह रहा है कि ये शो कर रहा है कि कितना ज़्यादा या कितना कम, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है उसके बेटे की, इसकी पूरा थीम यही है कि वो डॉक्टरी को एक तरह से अलाइव रखे हुए अपने बाप को, या अपने बाप की एक तरह से एग्ज़ाम्पल सेट किए हुए है, एक लाइफ लॉन्ग एग्ज़ाम्पल अपनी सूरत में. So I suppose I fell asleep waking at the fumes and furnace glares of Sheffield. तो वहाँ पे ये थोड़ा सोता है ट्रेन में, फिर शेफील्ड का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के फ्यूम से इसकी आँख खुलती है. वेर आई चेंज, वहाँ पे ये अपनी ट्रेन चेंज करनी होती है इसने,
and ate an awful pie, एक फजूल सी पाई खाता है, and walked along the platform to its end to see the arranged joining and parting lines reflect a strong, unhindered moon. सो ये वहाँ पे वो जो लाइंस हैं, रेलवे लाइंस, जहाँ पे वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही हैं या एक दूसरे से अलग हो रही हैं, चांद निकला हुआ है जो कि बड़ा क्लियर है. सो इस तरह की एक सिचुएशन या एक एटमॉस्फेयर में ही इज़ गोइंग टूवर्ड्स सम प्लेस. मे बी वो अपने घर जा रहा है या कहीं पे, लेकिन वो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें सोचते हुए ट्रैवल कर रहा है. सो दिस स्टैंजा may be termed as nature. We come to know unhindered moon, so it appears to allude to the beauty in nature. However, it could be interpreted as representing Larkin himself, as he may have felt unhindered in not having children himself. As the poem largely concerns having children, it may be interpreted that the speaker feels like an outsider in society. सो यहाँ पे चूँकि सोसाइटल प्रेशर भी ना हो कि सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि शादी, औलाद, ये सारा उसका हिस्सा है. तो अनहिंडर्ड इसकी अपनी तरफ भी इशारा है, जो कि चांद की तरफ भी कह रहा है कि चांद भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, वो भी अनहिंडर्ड है और ये भी अनहिंडर्ड है, यानी इनके रास्ते में रुकावट नहीं है. सो रुकावट मीन्स कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. टू हैव नो सन, नो वाइफ, नो हाउस और लैंड स्टिल सीम्ड क्वाइट नेचुरल. So he says कि मुझे तो ये सब कुछ quite natural लग रहा था. Only a numbness registered the shock of finding out how much had gone of life. सिर्फ ये था कि जब सोचना कि वो चीज़ नम कर देती थी थोड़ा सा कि कितना टाइम गुजर चुका है. How widely from others. Dockery now, only 19. He must have taken stock of what he wanted. Dockery जो तब सिर्फ 19 साल का था और जो 19 साल या 20 साल की उम्र में जिसकी औलाद हो गई, सो उसके पास तो हर चीज़ है, जो जो वो चाहता था उसने हासिल किया. एंड बीइंग कैपेबल ऑफ, नो दैट्स नॉट द डिफरेंस, रादर. और मे बी वो कैपेबल था ये सारी चीज़ें लेने का, लेकिन वो फिर इस चीज़ से मुतमईन होता है कि नहीं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ही वॉज कैपेबल और नॉट. रादर हाउ आगे है, कन्विंस्ड ही वॉज दैट ही शुड बी एडेड टू. सो इस स्टांजा में भी हम देखते हैं कि दैट स्टार्ट्स विद नेचर and he compares himself with nature, and then he ends up saying the same thing like Dockery उससे एक स्टेप अहेड ही रहा, उससे जूनियर यंग होने के बावजूद 19 या 20 साल की उम्र में उसकी औलाद भी थी और उसकी लाइफ कंप्लीट थी. So convinced he should be added to. Why did he think adding meant increase? To me it was dilution. So this stanza is named as time. So in this particular stanza, Larkin seemingly addresses a regular trope of his time through the metaphor of a closed door that is tight shut. So he may be commenting on the juxtaposition between the notion of all doors being open after education and the reality that is revealed over the passage of time. Also, this notion of things being wrapped, but time is conveyed through the pre-program idealism of believing that individual needs to be added to in the form of children, कि उनमें इजाफा या उसकी प्रोग्रेशन के लिए बच्चों का होना ज़रूरी है. So convinced that he should be added to, कि उसकी लाइफ में उसकी नस्ल को चलना चाहिए. Why did he think adding meant increase? कि उसको क्या लगता था कि इससे क्या उसका नाम चलेगा, ज़्यादा होगा. To me it was dilution. मेरे नज़दीक dilution होता है किसी चीज़ को का असर लेस इफ़ेक्टिव करना. So मेरे लिए ये चीज़ इतनी मीनिंगफुल नहीं थी. Where do these innate assumptions come from? तो ये फीलिंग्स इंसान के अंदर जो होती हैं ये कहाँ से आती हैं? Not from what we think true as to most want to do. वहाँ से नहीं जो कि हमें सच लगता है या जो काम हम करना चाहते हैं, ये फीलिंग उनमें से नहीं आती. Those wrapped tight shut like doors, they're more a style our lives bring with them. Habit for a while. Suddenly they harden into all we've got. So he says कि जो चीज़ें हैं, जो हमारा स्टाइल है, that eventually becomes something that we are used to of doing, and then it becomes a habit, and then
जब हम उसके आदी हो जाते हैं, सो वी गेट टू नो कि दैट थिंग कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, और हम उसको छोड़ नहीं सकते. सो यहाँ पे बेसिकली क्या सीम चल रहा है कि एज इफ ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड बैक इन द टाइम टू हैव चिल्ड्रन. ये उस चीज़ के साथ यूज टू हो गया, और ये चीज़ उसको लगा कि ठीक है, दैट इज़ गुड, और बट नाउ ही सीम्स टू रिग्रेट ऑन दिस. So यहाँ पे we come to know कि how we got it. Look back on the rear like sand clouds thick and close, embodying for Dockery and for me nothing. कि when we look back on time, so now what we realize is कि Dockery ने तमाम तर चीज़ों के बावजूद when we look back, we feel कि जिस तरह हम क्लाउड्स को देखते हैं थिक एंड क्लोज, इस तरह में क्लियरली नज़र आ रहा है कि डॉक्टरी ने अचीवमेंट कर ली हैविंग अ सन, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी, नथिंग विद ऑल अ सन्स हार्श पैट्रनेज, यानी एक सन की जो एक स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है केयर की, वो भी नहीं थी मेरे पास. लाइफ इज़ फर्स्ट बोर्डम देन फेयर. लाइफ में पहले बोर्डम थी और कि अकेले आप जी रहे हो, बोर हो रहे हो, एंड देन फेयर रिप्लेस्ड इट. फिर उसकी जगह पे फेयर ले लेता है कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम कोई लेने वाला नहीं होगा. और whenever whether or not we use it, it goes, and time keeps moving. So the theme of this whole stanza is youth, and leaves what something hidden from us choose, and age, and then the only end of age. So finally in the stanza, he tells about the youth, and he ironically switches to focus to youth and childhood. But before that, he is talking about how life has moved him. So, through the philosophically toned statement that life is first boredom, so Larkin conveys his personal opinion that his own childhood was boring, thus continuing his trope in the tone of pessimism. Interestingly, by selecting youth as his end focus, Larkin ultimately reminds us that life inevitably ends with death. So, कि उसका अल्टीमेट एंड मौत है, जो कि हर एक को आना है. सो ही वॉज बोर्ड व्हेन ही वॉज a child himself, and when he was grown up he was bored still, and then उसके बाद उसे डर लगना शुरू हो गया कि मेरे मरने के बाद क्या होगा, या अब मेरा सहारा भी कोई नहीं बन रहा क्योंकि मेरा बेटा नहीं है डॉक्टरी की तरह, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा. सो यहाँ पे उसे वो यूथ जो है उसकी एंडिंग भी नज़र आ रही है, जो कि डॉक्टरी की शेप में फर्स्ट क्लास थी, आइडियल थी कि उसकी औलाद भी हो गई टाइम पे, और 19-20 ईयर्स की एज में उसका बेटा भी था. मेरे पास ये वो सारी कंडीशंस, सहूलियात, वो सारी वो चीज़ें नहीं जिनको मैं शुरू में समझता था कि वो शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब वो रिग्रेट कर रहा है कि शायद ये चीज़ वो है जिसकी बेस पे डॉक्टरी मुझसे एक स्टेप अहेड रहा. So I hope you got the idea of the poem. Thank you very much. Please stay tuned and subscribe the channel.